Shanti, Avyakti परिवार Om में Shanti, स्वागत है। bienvenue à आज Avyakti के Parivar. सफलता Aujourd'hui, c'est le मुहूर्त 30. आज का विषय है त्याग और Devenez une incarnation सेवा। de succès. Le sujet de ce soir, renonciation et tapasya. सेवा में Le सफलता signal का Avyak, la मुख्य base साधन principale du succès dans les त्याग services, c'est le और renoncement तपस्या है। et la tapasya. त्यागी और तपस्वी अर्थात Renonciateur et un tapaswi signifie quelqu'un qui est toujours fondu dans l'amour pour le Père, quelqu'un qui se fond dans l'océan d'amour, de connaissance, de félicité, ज्ञान de आनंद bonheur, सुख de शांति paix. के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्यागी तपस्वी बच्चे सदा अपना समय संकल्प संबंध संपर्क De tels सब enfants renonciateurs सफलता et tapaswi सफलता feront toujours en में sorte que लगाते leur हैं। temps, leurs pensées, leurs relations et leurs धीरे से connexions सुनेंगे। soient couronnés de succès et deviendront des incarnations de succès. Om Shanti. Voici Moini Didi est en visite. OK, merci. Je suis sur les lèvres maintenant. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. You all okay? Vous allez bien? Say it Om Shanti. Om Shanti. Elle vous entend pas. Om Shanti. Everyone is happy. Tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est heureux. Making yourself full. Vous vous emplissez. मैंने हिंदी में बोलना. Elle est supposée parler en hindi. Ça va revenir? जब त्याग शब्द सुना, किस चीज का त्याग? À chaque fois que j'entends le mot renonciateur ou renonciation, de quoi अगर dit-elle? मन में ये संकल्प है कि हमको किसने दिया है, Si on pense qui a été celui qui nous a tout donné, même avant de venir dans la connaissance de Baba, je me posais la question. Je me disais toujours que c'était les cadeaux de Dieu parce que certains disent que c'est leur fortune, d'autres disent que c'est leurs efforts, mais j'ai toujours dit que c'était les cadeaux de Dieu. Et si c'est Dieu qui nous donne, comment se fait-il que j'ai à renoncer? Parce que rien ne nous appartient. Si on pense que cela nous appartient, quel que soit la boutique au trésor est emplie pour nous. Combien d'entre vous pensent que cela appartient à Baba? Et alors, si cela appartient à Baba, à quel moment est-ce que vient cette renonciation puisque nous avons utilisé ce que Baba nous a donné dans le service et nous le voyons et nous voyons que plusieurs âmes ont cette pensée que si j'avais cet instrument en particulier, j'aurais fait beaucoup plus de services. Et parce qu'à cause de cette pensée, ça vous vient, mais quand cela se passe, ou quand l'argent ou que les objets viennent, doit le garder un peu plus longtemps pour moi-même. Alors, il y avait cet exemple qu'une âme disait, elle était très riche, et il y avait une autre âme qui disait toujours que, tu sais, si j'avais autant d'argent qu'elle, je donnerais plus. Et la deuxième a eu beaucoup d'argent, mais elle ne pouvait pas y arriver parce qu'elle l'utilisait pour elle-même ou faire des choses pour elle. Alors, ce que Baba nous dit, que Baba veut que chacun d'entre nous, comme des gérants, alors d'utiliser tout ce que nous avons, de l'utiliser à bon escient. C'est ce que Baba veut pour nous. Et si rien ne nous appartient,
Quand est-ce que je fais de la renonciation? ये कोई त्याग है, कूड़ा Quand est-ce que je कचरा फेंक रहे हो, renonce? Daddy ये कोई Gulzar, त्याग है। J disait, पांच विकार तो आपको दुख ही दे रहे थे ना, vous donnez tous vos vices et तो renoncer जिससे आप à दुखी थे ces वो vices. चीज देने को तो फिर त्याग Ce नहीं n'est कहेंगे pas, ना। ce n'est फिर भी pas बाबा que कह vous êtes रहे en train हैं de renoncer, c'est que vous recevez de belles choses सेवा में quand vous renoncez à सफलता ces का vices, मुख्य puisque त्याग ce n'est साधन pas है bon त्याग pour vous. और Et le तपस्या। signal aviaque, donc on तो focalise sur la त्यागी और renonciation et le तपस्वी tapasya. अर्थात La सदा base बाबा principale du की लगन succès dans में le लवली। service est le renoncement et la tapasya. तो भी Un तपस्या को भी कैसा renonciateur et बनाना, un इजी tapaswi signifie बाबा की quelqu'un लव में लीन, qui est toujours लवली। fondu, कितना इजी है ना, दिन प्रतिदिन बाबा qui इजी est करते toujours जाते हैं। fondu सदा dans l'amour pour आपकी le लगन Père. में C'est लवली, d'être dans प्रेम के un सागर में niveau de, समर्पित, de bonne humeur, d'amour. Alors, quelqu'un ज्ञान qui est toujours आनंद और सुख fondu शांति dans के l'amour सागर pour में, le Père, quelqu'un qui se fond ज्ञान dans l'océan आनंद d'amour, सुख शांति l'océan के de सागर connaissance, में l'océan de félicité, समाये हुए l'océan de को ही bonheur et de कहेंगे paix. तपस्वी। Seule une telle âme peut être कोई appelée un कहता था 10 घंटे tapaswi. जो योग में बैठे वो तपस्वी है, कोई Quelqu'un अलग अलग disait, डेफिनेशन। बाबा क्या si कहते हैं quelqu'un कि जो s'assoit लीन रहता है pendant 10 heures, il वो s'appelle un तपस्वी है। tapaswi. Et Baba dit, कितना इजी है ना, नहीं? ceux qui sont dans बिंगो। un état d'amour et qui आजकल sont बाबा बहुत perdus dans कहते cet हैं कि लव amour, तो है पर une लीन âme qui नहीं। est fondue dans cet amour, c'est cela un लीन ऐसे जैसे tapaswi. बाबा कहते हैं सागर में Alors, les enfants doivent ऊपर être नीचे पानी ही fondus पानी है, dans जैसे l'amour लीन है। de Dieu et on doit être तो même ऐसे fondu dans त्यागी l'amour de तपस्वी Dieu, बच्चे perdu dans l'amour de Dieu. सदा De tels अपना enfants, Baba समय dit, seuls ces renonciateurs et tapaswi feront संकल्प toujours en संबंध sorte que leur temps, leur pensée, leur relation et leur संपर्क सब connexion सफल करते सफलता मूर्त emplis de बनते जाते succès हैं। et deviendront aussi des incarnations de succès. सफलता क्या है? Qu'est-ce que le जो succès, dit कर्म करो Moïni? उसको संपन्न कर सको, Quelle que soit la tâche que nous सफल किया। faisons en कुछ शुरू sorte किया que बीच में छोड़ ce दिया devienne un succès. Ce n'est तो pas सफल नहीं commencer हुआ। quelque chose et ne pas le तो लक्ष्य compléter. क्या होना Ce n'est चाहिए pas quelque chose qu'on fait avec succès. कि Notre हम but, c'est toujours पूरी d'aller तरह jusqu'au से bout. जैसे अपनी जीवन के लिए भी क्यों आए हम बाबा के पास। Et on essaie. कई फिर बीच बीच में अलग Et रास्ते ले लेते हैं ना हम लोग। ce n'est pas comme si, क्यों आए बाबा के पास? क्या चीज si on se pose हमें une आकर्षित question, की जो हम pourquoi बाबा के suis-je पास venu à आए? Baba? Qu'est-ce देवता qui स्वरूप m'a बनना है, attiré à Baba? Qu'est-ce qui a राइट? fait ये que je suis आकर्षण था। venue à Baba? किस किस को लगता है कि हम देवता थे पहले? हर एक को, कईयों को नहीं लगता, नहीं थे देवता। Est-ce qu'on a cette ivresse? मेरे Est-ce que को c'est तो 81 l'ivresse बोला, de मैंने devenir कहा une मैं तो déité? पहले ही Est-ce कहती que थी cela ज्ञान vous a से भी attiré? Pour moi, dit Moïni, कि हम तो सभी देवता स्वरूप हैं। कई हमसे même पूछते हैं avant de venir en आप तो Guyane, हिंदू हो, venir dans la तब नहीं connaissance de कहेंगे। Baba, मैंने कहा हम सनातनी हैं। je me voyais कहते हैं comme des कैसे? मैंने कहा déités. हूँ Et आदि plusieurs demandaient, सनातन देवी देवता धर्म vous êtes des घराने hindous? की है। क्योंकि सिर्फ सनातनी का मतलब भी क्या हुआ? Sanatani. मतलब Et सनातनी का मतलब parfois, पुरातन, Sanatani, ce n'est pas compris, बहुत alors समय से चलता आता है, आदिकाल से चलता आता है। लेकिन कंप्लीट तो क्या है? cependant, आदि सनातन देवी quand on dit देवता धर्म। complet, on dit cela, on dit Ave तो अगर हम Sanatan, ये नहीं ça कहते veut तो dire qu'on समझ नहीं est ये लोग la क्वेश्चन religion करेंगे। originelle et éternelle. C'est ce que l'on तो répond हिंदू aux नहीं gens है पर हम quand ils nous disent, êtes-vous सनातनी des hindous? Nous ne sommes pas des hindous, nous और sommes सनातनी de la religion मतलब originelle et सनातन देवी éternelle des देवता धर्म déités. की है, Et nous क्योंकि उन्हीं को ही sommes हम de ce पूजते थे ना groupe पहले। de अब बाबा déités. कहता है आप पुजारी Parce बन que गए थे, au बाबा début, तुमको nous पुजारी étions से पूज्य en बनाने के dévotion लिए। face à ces déités. Et तो Baba इसलिए dit que लक्ष्य nous अपना sommes devenus पूरा des, करते रहना ही des, सफलता
les âmes qui ont été dans cette forme d'adoration. Alors, la transformation du soi, avoir les qualités divines, et même dans nos pensées, nos paroles et nos actions, la divinité est visible, le divin est visible en nous. Et plus on devient divin, plus nos pensées, nos paroles, nos actions deviennent divines. Et on est de plus en plus dans ce succès et on devient l'incarnation du succès. Alors, Baba des 16 degrés célestes, complet, et les Maryada Purushottam. Donc, on doit toujours avoir ce but de devenir complet et parfait et de devenir une déité. Et ensuite, d'avoir ce genre de façon de vivre. Et la tapasya et le renoncement est très important. Et quand on dit que tout appartient à Baba et que tout est pour Baba, c'est de cette façon qu'on renonce. Ce n'est pas que l'on donne quelque chose à Baba. Alors, si je donne quelque chose, je donne des choses à Baba. Mais c'est en fait de devenir digne, utile. Et Baba dit, alors on doit utiliser tout ce que l'on a comme cadeau à bon escient. Voici la Vyak Murli à partir de 1969. Les joyaux de la connaissance et les perles de l'amour. C'est le Murli du 15 septembre 1974. L'objectif ultime de faire l'effort, c'est de devenir un ange avyakt. En ce moment, il est temps pour vous, les enfants, de faire l'ultime effort pour atteindre votre dernier niveau. Tous les enfants Maharati, qui sont des instruments, devraient également être des exemples d'instruments dans leur façon rapide de faire des efforts. Quel est l'effort le plus élevé? Allez-vous suivre? Par exemple, sous la forme Sakar, vous avez vu comment l'effort doit être fait et ce qu'on appelle l'effort. Auparavant, tout le monde avait avancé en voyant Brahma-Baba dans sa forme Sakar, qui était le symbole de l'effort. Mais qui est le symbole sous sa forme physique à cette époque? Les Maharatis. Est-ce que les Maharatis font de tels efforts qu'en les voyant, l'effort de beaucoup d'autres âmes devient facile? Savez-vous quel est l'effort ultime? Au début, vous avez fait des efforts pour en finir avec la conscience du corps, avec la conscience d'être Chaturbhuj, image à 4 bras. Et grâce à ça, vous avez pu supprimer la conscience d'être une femme, ainsi que toute faiblesse ou lâcheté. Vous êtes ainsi devenue sans peur et puissante. Ainsi, au début, vous avez fait des efforts pratiques pour achever, pour en finir avec la conscience du corps et en ayant la conscience des Chaturbhuj. En marchant et en vous déplaçant ou en parlant à quelqu'un, vous aviez l'ivresse de ne pas être une femme, mais d'être un château.
तो जैसे आदि में देह अभिमान मिटाने Ces deux sanskars, ces deux pouvoirs कि se मैं sont जगत combinés पुरुष हूँ, grâce auxquels यह vous êtes प्रैक्टिकल capable क्वेश्चन d'accomplir चलाना, les deux tâches. चलते फिरते व बात करते यह Ces deux नशा sanskars et ces रहता deux pouvoirs se sont कि combinés मैं grâce नारी auxquels vous êtes नहीं capable हूँ, d'accomplir les deux मैं tâches. De la चतुर्भुज même हूँ। manière, तो ये quel दोनों objectif संस्कार ultime devez-vous और garder वह en दोनों conscience शक्तियाँ à travers मिल lequel vous गई, développerez जैसे कि ये दोनों automatiquement ces कार्य qualifications? हम कर सकते Quel हैं। est l'objectif तो ultime वैसे ही de अंतिम l'effort? लक्ष्य C'est कौन de सा devenir स्मृति un में ange रहे, aviaque. जिससे कि ऑटोमेटिकली Qu'est-ce que वह c'est la लक्ष्य आ forme जाए। aviaque? C'est वह अंतिम d'être लक्ष्य पुरुषार्थ के angélique. लिए कौन सा है? C'est à suivre. वह है Om अव्यक्त Shanti. फरिश्ता हो रहना। अव्यक्त रूप क्या है? फरिश्तापन। उसमें भी लाइट रूप सामने है, अपना लक्ष्य। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति।